Good morning, students. Science and Technology, Standard 10, Part 2nd. My subject teacher, Garte AD. Today we learn Chapter 1st, Heredity and Evolution, यानी कि अनुवंशिकता और उत्क्रांति. In this chapter, a Darwin's theory of natural selection, यानी कि डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत. चार्ल्स डार्विन had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observations of those specimens, he published an theory of natural selection with purchase the survival of fittest. For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species. While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. All the organisms compete with each other in a life threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which shows the modification essential for winning the competition. However, besides the natural selection also plays important role, because the natural selection only those organisms which are fit to live, and the rest persist. Sustaining and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific characters. Darwin's theory of natural selection was widely accepted for long duration. However, some objections were raised against the theory. Some of the main objections are: natural selection is not the only factor responsible for evolution. Second one, Darwin's did not mention any explanation about useful and useless modifications. Third one, there is no explanation about show changes and about changes. Irrespective of all these objections, Darwin's works on evolution has been milestone. डार्विन्स का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत. चार्ल्स डार्विन ने विविध प्रदेशों में वनस्पति तथा प्राणियों के असंख्य नमूने उसने इकट्ठा किए थे, और उनके निरीक्षण से डार्विन ने जो सक्षम होगा वही अपना अस्तित्व बनाए रखता है, यह बताने वाला प्राकृतिक चयन का सिद्धांत उसने प्रसिद्ध किया. डार्विन ने इसके लिए ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यह पुस्तक भी उसने प्रसिद्ध की थी. इसमें स्पष्टीकरण देते हुए डार्विन ने कहा, सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं. यह सभी सजीव एक दूसरे से प्रतियोगिता भी करते हैं, जो एक प्रकार से जानलेवा होती है. इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए जो सजीव आवश्यक गुणधर्म दर्शाता है वही जीवित रहता है. परंतु प्राकृतिक चयन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रकृति में केवल अनुकूल सजीव ही जीवित रहते हैं, बाकी ये सब सजीव जो है वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं. जीवित सजीव पुनरुत्पादन कर सकते हैं तथा अपनी विभिन्न विशेषताओं के साथ नई प्रजाति का भी निर्माण कर सकते हैं. डार्विन का यह प्रकृति चयन का सिद्धांत है बहुत दिनों तक सर्वसामान्य रहा, परंतु बाद में कुछ विषयों के संदर्भ में उसको भी विरोध हो गया, जिससे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे नीचे दिए गए हैं. प्राकृतिक चयन का एकमात्र मुद्दा उत्क्रांति तथा आधारभूत अंग नहीं है. उपयोगी तथा निरुपयोगी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण डार्विन द्वारा नहीं दिया गया. धीमी गति से होने वाले परिवर्तन तथा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन, इनका उसने उल्लेख नहीं किया. फिर भी डार्विन द्वारा उत्क्रांति के विषय में किया गया कार्य मील का पत्थर वो साबित हुआ है. सेकेंड वन, लेमार्किज्म.
Jean Baptiste Lamarck proposed that morphological characters occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activate or laziness of that organisms. He called this concept as a principle of use of disuse of organisms. Further, he said the neck of giraffe has been too long due to browsing on leaves of tall plants be extending their neck for several generations. Similarly, shoulders of the Aaron Smith have been very strong due to frequent hammering movements. Wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use. Legs of the birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snakes have lost their legs by modification in their body for burrowing habits. All these examples are types of acquired characters and the transferred from one to another generation. This is called as theory of inheritance of acquired characters or Lamarckism. Development of organism organs due to specific activities of their degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer of those characters from generation to generation was rejected because it had been verified many times that modifications brought in us are not transferred to next generation, and thereby Lamarck's theory was disproved. यानी कि लैमार्कवाद लैमार्कनिज्म यानी कि उत्क्रांति होते समय सजीवों की शरीर रचना में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन उस सजीव द्वारा किए गए प्रयत्न अथवा आलस पर निर्भर होते हैं, ऐसा यह लैमार्क ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था. इसे उन्होंने इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग सिद्धांत भी कहा था. इसके आगे जाकर उन्होंने ऐसा भी कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ अपनी गर्दन तानकर पेड़ों के ऊपर की पत्तियां खाने के कारण उसकी गर्दन लंबी हो गई. उसी प्रकार लोहार के कंधे जो है वो कंधे घनों के प्रहार से मजबूत हुए. शतुरमुर्ग, ईमू इत्यादि प्राणियों के पंख उपयोग में न लाने के कारण कमज़ोर हुए. हंस, बत्तखे के पैर पानी में रहने से तैरने योग्य हुए तथा सांप ने बिल में जाने योग्य शरीर रचना करते करते अपने पाँव जो थे वो गंवा दिए. ये सभी उदाहरण उपर्जिता विशेषताएं यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इस स्वरूप में होने के कारण ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित हो गए. यही उपर्जिता परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत या लैमार्कवाद का सिद्धांत है. विशिष्ट स्वरूप के प्रयत्नों से शरीर अंगों का विकास अथवा प्रयत्न न करने के कारण वो धीरे धीरे नष्ट होना मान्य हुआ, परंतु उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण अमान्य हुआ क्योंकि स्वयं में लाए गए परिवर्तन नई पीढ़ी को नहीं दिए जाते हैं. इसकी बार बार जांच की गई और लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत बाद में गलत साबित हुआ. स्पेसिफिकेशन यानी कि जाति उद्भव. Formation of new species of plants and animals is the effect of evolution. Species is the group of organisms that can produce fertile individuals through natural reproductions. Each species grow in specific geographical conditions. Their foods, habitats, reproductivity, ability, and period is different. However, genetic variation is responsible for formation of new species
from earlier. 1. Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. Similarly, geographical or reproductive isolation also leads to स्पेसिएशन. प्राणी और वनस्पतियों के विभिन्न जातियों का निर्माण यह एक उत्क्रांति का ही एक परिणाम है. प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को हम स्पेसीज यानी जाति कहते हैं. प्रत्येक जाति विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति में बढ़ती है. उसका आहार विहार, फलन क्षमता, समागम काल इत्यादि भिन्न भिन्न होता है. इसी कारण जाति विशेषता स्थायी बनी रहती है. परंतु एक जाति से दूसरी जाति का निर्माण होने के लिए कुछ जनुकीय बदलाव भी जिम्मेदार होते हैं. उसी प्रकार से भौगोलिक तथा पुनरुत्पादनीय बदल की जिम्मेदारी होती है. उसी प्रकार सजीवों में भौगोलिक अथवा पुनरुत्पादनीय विभाजन होने पर भी कालांतर में जाति परिवर्तन यानी स्पेसिफिकेशन यानी जाति उद्भव भी उसमें होता है. सेकेंड वन, ह्यूमन इवोल्यूशन. द बायोडाइवर्सिटी that is known today has been said to be performed from very simple unicellular organism due to evolution. In this evolution, origin of human evolution can be shown as per the picture given below. Last dinosaur disappeared approximately 7 crore years ago. At that time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestors who were more or less similar to the modern lemurs. Tail of these monkey-like animals of Africa is said to be disappeared about 4 crore years ago. मानवीय उत्क्रांति यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन, उत्क्रांति के कारण अत्यंत सरल एक कोशिकीय सजीवों को लेकर आज तक ज्ञात सभी जैव विविधताओं का सृजन हुआ दिखाई देता है. इनमें मानव वंश की शुरुआत संक्षिप्त में आकृति में बताई गई है. करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व जब अंतिम डायनासोर का विनाश हुआ तब बंदर जैसे दिखने वाले प्राणी उनसे भी अधिक प्राचीन ऐसे थोड़े बहुत लेम्यूर के जैसे दिखने वाले प्राणियों से हमारा विकास हुआ है. 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका में इस बंदर जैसे प्राणियों की पूंछ जो है वो नष्ट हो गई हुई. देयर डेवलप ड्यू टू enlargement in brain. Their hands were also improved and thus apes-like animals were evolved. Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. Remaining ape-like animal stays in Africa and from them gorillas and chimpanzees evolved about 2.5 crore years ago. Evolution of some of the 2 crore years old species of apes seems to be occurred in different way. They had to use their hands more for eating foods and other works. 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के इस बंदर जैसे प्राणियों की पूंछ नष्ट हुई. उनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होकर उनका विकास हुआ. हाथों को पंजों में सुधार आया तथा वे एप जैसे प्राणी बने. कालांतर में ये शुरुआत एप जैसे प्राणी दक्षिण तथा आग्नेय एशिया में पहुँचे तथा अंत में गिबान तथा ओरांगुटान में उनका रूपांतर हुआ. शेष एप जैसे प्राणी अफ्रीका में स्थायी हुए. लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व उनसे चिंपांजी तथा गोरिल्ला का उदय हुआ. लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व एप के कुछ जातियों का विकास हुआ. भिन्न रूप में होते हुए दिखाई देते. अन्न ग्रहण करने के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए उन्हें अपने हाथों का प्रयोग अधिक होने लगा. Those apes started to live on lands as the forest started to decline due to dry environment. Their lumbar bones developed in such a way that they started to stand in erect posture. In
grassland, and thereby their hands become available for use anytime. These first human like animals with erect posture, which were using their hands, have evolved about 2 crore years ago. First record of human like animals is with us in the form of Ramapithecus ape from East Africa. Afterward, these apes grow up in size and become more intelligent, and thus the apes of South Africa evolved about 40 lakhs years ago. The morphology of these human like animals started to appear like to be member of the genes Homo about 20 lakhs years ago, and thus skilled human developed about 15 lakh years ago. Human walk with erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia of Asian countries. अभी शुष्क होने वाले वातावरण के कारण जब जंगल नष्ट होने लगे तब ये ऐप पेड़ से उतर कर नीचे आए। उनके कमर की हड्डियों का विकास इस तरह से हुआ कि वो घास वाले प्रदेशों में सीधे खड़े रहने लगे। तब उनके हाथ किसी भी उपयोग के लिए स्वतंत्र हुए। ये हाथों का उपयोग करने वाले सीधे खड़े रहने वाले पहले मानव सदृश प्राणी लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। मानव सदृश प्राणियों की सबसे पहली अभिलेख हमारे पास है, जो पूर्व अफ्रीका के रामापेथिकस इस ऐप की आगे चलकर यह ऐप आकार में बड़ा हुआ तथा अधिक बुद्धिमान हुआ। करीब 40 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका के ऐप का उसमें विकास हुआ। करीब 20 लाख वर्ष पूर्व इस मानव सदृश प्राणी की रचना मानव यानी होमो इस प्रजाति के सदस्य जैसी हुई। अपने करीब करीब जैसे दिखाई देने वाले इस तरह के कुशल मानव उसमें तैयार हुआ। Evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh year, and meanwhile it discovered the fire. Brain of 50,000 years old man had become sufficiently evolved to the extent that it could be considered as member of this class wise man, Homo sapiens. Neanderthal man can be considered as the first example of wise man. The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago, and afterward this evolution had been faster than the earlier. About 10,000 years ago, wise man started to practice the agriculture. He started to rear and cattle herds and establish the cities. Culture development took place. Art of writing was invented about 5,000 years ago, and thus a history had been started. Modern sciences emerged about 400 years ago, and industrial society was established about 200 years ago, and now we have reached at this stage and still are searching the details of roots of human ancestry. करीब 1 लाख वर्ष तक सीधे चलने वाले मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा होने की दिशा में उनका विकास होता रहा तथा उनसे अग्नि के उपयोग की को खोज निकाला। करीब 50,000 वर्ष पूर्व के मानव का मस्तिष्क लगभग पूर्णतः विकसित हो चुका था और बुद्धिमान मानव इस वर्ग का सदस्य मानने योग्य हो गया था। निएंडरथल मानव यह बुद्धिमान मानव इस वर्ग का पहला उदाहरण माना गया। करीब 50,000 वर्ष पूर्व क्रो मैग्नम मानव अस्तित्व में आया तथा उसके बाद यह विकास पहले से की अपेक्षा तीव्र गति से हुआ। करीब 10,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान मानव खेती करने लगा, जानवरों को झुंड में पालने लगा, उन्होंने बस्तियों का निर्माण किया, फिर संस्कृति का विकास हुआ। करीब 5,000 वर्ष पूर्व लिखने की कला का आविष्कार हुआ तथा इतिहास की शुरुआत हुई। करीब 400 वर्ष पूर्व आधुनिक विज्ञान का
उदय हुआ तथा 200 साल पूर्व औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। अभी हम यहाँ तक आए हैं, फिर भी आज तक मानव वंश के उद्गम के विवरण की खोज अभी तक जारी ही है।